does the Minister consider the human rights of the Kashmiri people are equal to the rights of Ukrainian or other country and community? Why is India missing from the FCDO's annual list of countries giving rise to human rights concerns? My lords, this is not the first time I have raised the plight of the Kashmiri people. बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन को बरतानवी पार्लियामेंट में भारत में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को भरपूर तरीके से उजागर करने और मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करने पर मुख्तलिफ शख्सियात और तंजीमों की तरफ से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मलका बरतानिया की प्लाटिनम जुबले सालगिरह से कबल बुलाए गए पार्लियामेंट के अहम इजलास में लॉर्ड कुर्बान हुसैन की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के सिलसिला में और मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारत में गैर कानूनी हिरासतगी के बारे में इंतहाई अहम सवालात उठाए गए। लॉर्ड कुर्बान ने सवाल उठाया कि बहुत से कश्मीरियों को यकीन है कि माजी में भी भारत ने झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाकर भारतीय अदालतों के जरिए शोहरत याफ्ता कश्मीरी रहनुमाओं मकबूल भट्ट और अफजल गोरू को फांसी पर चढ़ाया। लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि भारत ने इस मरतबा एक और मारूफ मशहूर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक का ट्रायल जारी रखा हुआ है और यासीन मलिक के बेशुमार पैरोकार बरतानिया में भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि भारत के इस तरह के इक़दामात से यासीन मलिक की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक हैं और कश्मीरी कौम को इस पर सख्त तशवीश है। क्या बरतानवी हुकूमत अपने इदारों को हरकत में लाएगी ताकि यासीन मलिक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके? Prominent political leaders such as Shabir Shah, Ashiya Andarabi and Yasin Malik have been incarcerated for a very long time. Their families fear for their lives. Affiliated to the United Nations, the Jammu and Kashmir Council of Human Rights regularly reports to the UN about ongoing human rights suffering in Kashmir. Genocide Watch has declared that there is a genocide in making in India, including Kashmir. In the recent years, the Indian government has taken even more draconian steps to oppress the Kashmiri people by withdrawing Article 370 and 35A of the Indian Constitution, dismissing the regional government, declaring the state as a union territory, arresting tens of thousands of more people, and cutting off all communication links, including the internet service. Although some of these extraordinary measures have been partly restored, it's far from being a free, open, and democratic region. What I have described is a tip of the iceberg. The UN Commission for Human Rights has made repeated requests for free access to investigate these reports of human rights abuses. But those requests have never been respected by the Indian government. My lords, this is not the first time I have raised the plight of the Kashmiri people. I'm sure the Minister is aware of the situation. May I ask the Minister to address the following points individually in his response? I understand he may not be able to have time to answer them all in detail today, but I will be equally happy if he writes to me with full answers and place a copy in the library. Number one, does the Minister consider the human rights of the Kashmiri people are equal to the rights of Ukrainian or other country and community? Number two, if yes, why is India missing from the FCDO's annual list of countries giving rise to human rights concerns? Number three, the UK is a permanent member of the UN Security Council. So what is the British government proposing to do to persuade the UN to investigate the human rights abuses, particularly the unmarked mass graves in Kashmir? Number four, I understand the Minister is visiting India in the near future. Will he discuss these matters with his counterpart and provide a feedback to the Parliament? And finally, if India continues to violate international human rights laws, will the government consider trade sanctions against that country?